Hi everyone. So we are finally starting with the polity series as well, because the first video that I've uploaded was about the approach that you can have for the subject, considering the different sources that you use to cover, and what could be your possible expectations from this channel with respect to covering of Indian polity. But now we are going to start with the main topic, and as I have given you that a rough sequence is what I have already suggested you in that. So we are going to do the things on the similar lines. I won't say that exactly the same would be followed, because it has to be a kind of organic teaching. As and when we proceed with one topic, we get to see n number of added topics also. So we have to kind of modify the sequence. So we start with the first one, which is your basic concept of definitions, because if you do not understand these basic concepts and definitions, आगे की चीज़ें समझना आपके लिए थोड़ा सा problematic हो सकता है. So we would just start right from the basics, okay? And also please do check all the earlier links which are given in the description section. We are continuing with the 4 subjects per day for 5 days a week from Monday to Friday. We have started this right from 2nd of May 2022. So geography, environment ecology, Indian polity and modern Indian history are the subjects that we are covering. Do check the other videos also. And if these videos are helping you in your preparation, please do like, comment, share and subscribe. Thank you. Okay. When we talk about the basic concepts and definitions to understand the whole Indian polity structure, the first, of course, thing that would come to your mind, even I would assume that, would be the constitution, the word constitution, because that is the most famous word that you would study जब आप पॉलिटी को पढ़ते हो. ठीक है. सो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बट हम रिलेट कर लेते हैं बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक थिंग टू बी स्टडी, एंड एनी पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इज somehow based on the constitution. Now what kind of constitution, वो तो हम आगे देखेंगे, but it has the backing of a kind of constitution. So जब हम ये word बोलते हैं constitution, तो what is the meaning of, or what could be the possible reference for that? Let's see the first explanation. Now constitution could be defined as a document or a set of documents. ठीक है, this is how your NCERT explains it. So document, or it could even be a set of documents which specifies that how the state is to be constituted and governed. Now be very specific with every word that I am speaking and every word that you are seeing in the box on the screen. Now when we say document or a set of documents, which means there could be multiple documents or series of documents. ठीक है. Now these document or these थिंग्स विल स्पेसिफाई कि एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नेंस कैसे होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ईयर मतलब बनना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनना, एंड ऑफकोर्स द गवर्नेंस, हाउ द गवर्नेंस एस्पेक्ट शुड बी देयर. नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज टर्म्स ऑल्सो. ठीक है, घबराना नहीं है आपको. नाउ व्हेन यू कम अक्रॉस दिस वर्ड स्टेट, यू हैव टू बी वेरी clearly understanding the state word is not about the rajya that you understand, the state government that you understand, let's say in the case of India. No, it is, they are talking about for the time being a nation state. Okay. For example, I will show you the concept of state also. I will show you the definition given in NCERT, the question asked in prelims examination right there in 2021. गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब कुछ समझेंगे. ठीक है, मैं आपको बस एक ब्राउज करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम क्या क्या बातें करने वाले हैं. जस्ट बी स्लाइट पेशेंट एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो अ डॉक्यूमेंट जो आपको बताएगा कि एक स्टेट, एक नेशन स्टेट जो है वो कैसे बनना चाहिए एंड हाउ इट शुड बी गवर्नड. Also, a constitution will be that document which will seek to perform several functions. So what are the functions which are expected to be performed by a constitution? We have another section on it. हम उस पर अभी थोड़ी देर में आराम से बात करेंगे. I'll give you the whole list of functions so that in case they ask you it in mains, you will have enough points to write, and in case they ask you to choose in the prelims also, you will have enough points to write. So every word that I have given you in box, इसको हम और अलग अलग से भी further at some point of time in the lecture series we will discuss. Okay. Now let's see kind or types of constitution. For the timing, we are talking about the topic of constitution in general and not specifically about the constitution of India. Okay. Now on one basis you can have the classification as the written and the unwritten constitution. Now the name will tell you कि written का क्या मतलब होना चाहिए, which is written, लिखा होगा जो, और unwritten मतलब क्या वो नहीं लिखा होगा. But if something is not in a written format, how will it even be used to govern? Right? ऐसा तो हो नहीं सकता. So
the basic difference between a written and an unwritten constitution would be that for this kind of constitution, a body like a constituent assembly, like for the case of India, we have had the body constituent assembly, ठीक है, which was set up specifically to constitute the constitution, उसको बनाने के लिए, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक स्पेशल बॉडी बैठी थी एक स्पेशल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट वुड बी योर रिटन वन। सो इट इज़ वन कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, एक जगह एक किताब में सब कुछ है। आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, संविधान देखा होगा, एक जगह पर सब कुछ है। एंड इट विल हैव मेनी आर्टिकल्स अबाउट दिस स्टेट, दैट हाउ इट शुड बी रन एंड गवर्नड एटसेट्रा, एंड इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। For one example of your written constitution is your Indian constitution or Constitution of India. But then what do we understand by the unwritten? Is it like not written at all? No. It is written, but it is not a compact document. It is not compiled at one place. It is just a series of documents. Therefore, here we have used the word set of documents. ठीक है? And here how the decisions are taken, they are just collectively taken by the responsible authorities. They will take the decisions based on the series of documents. कोई एक जगह पे सारे article नहीं mention है. But more importantly, it was never prepared by a constituent assembly body, something body of that kind which was specifically set up to draft that constitution. ठीक है? So one example is your UK और Britain का constitution. Moving on to another category of constitution. So we will have another category as your rigid and flexible constitution. Now this classification is done on the basis of amendment. So amendment पे हम एक अलग class लेंगे, sectional topic is there. Then types of majority also sectional topic is there, so you don't have to worry. So how do you amend the constitution? Based on that you have this classification. So rigid का क्या मतलब होता है? In the normal language also we understand something which is not easily molded or easily changed, right, or modified. ठीक है? So it is not easily amendable firstly, and it will need special majority for the amendment. अगर amendment करना है, उसमें amendment का क्या मतलब है? You will bring important changes, because see, any constitution, if it would be prepared of, let's say at some point of time, at X point of time, जैसे हमारा 1949 में बन के तैयार हो गया था, बट इन्फोर्स हुआ 1950 में, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ आज हम किस टाइम पर हैं, आज हम 2022 में हैं। सो इन दीज मैनी ईयर्स वी नो दैट मैनी थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, ठीक है, हैव चेंज्ड रादर, and will continue to change in the times to come. So in such a situation you would need some kind of a constitution or documentation which will be, somehow be able to adjust with the changing situations. It should not be that rigid that once made it just cannot kind of accommodate in the changing situations, and therefore amendments or changes are needed. ठीक है? तो जो रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन वो आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता और उसके लिए अलग तरीके की मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी. सो फॉर एग्जांपल यूएस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, इट इज़ ईजिली अमेंडेड, इसको अमेंड करना आसान होता है और एक नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो जाती है. बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, वो हम इंडियन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आई टेक अ स्पेशल सेक्शन ऑन मेजॉरिटीज़ और द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ और फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे. जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर क्लासेस. नाउ अब यहाँ पर बात है कि फिर इस केस में यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल यूके का आप ले सकते हो. बट बात है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक सिस्टम डू वी हैव और कॉन्स्टिट्यूशन डू वी हैव. सो हियर वी नीदर हैव वेरी रिजिड nor very flexible. We have blend of both rigid and flexible constitution, and the details anyways we will do when we discuss the topic on the amendment. चलिए, अब मैंने आपको बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर उठाएंगे. जैसे स्टेट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ उठाएंगे, फंक्शंस हम थोड़े आगे में देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो विल बी ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल. टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी एंड हाउ द अमेंडमेंट प्रोसेस हैपन्स, दैट ऑल्सो विल डन इन डिटेल. So let's start with now the concept of state. Now according to the international law, state को अगर हमको define करना है, so it is typically defined based on one convention which is called as Montevideo Convention of 1913. Now this convention was on the rights and duties of the state. इसको लेकर के एक convention
किया गया था, वहाँ पर डिफाइन किया गया कि एक स्टेट जो होगा, नेशन स्टेट जो होगा, उसके क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, और rather you can say that what kind of a thing would be called as a state. So according to this, the state will be a community formed by people and exercise permanent power within a specified authority. And then it was said that it will have 4 qualifications. The table and the written stuff here are the same, so you can refer any one of them. कि ये 4 तो क्राइटेरिया या क्लासिफिकेशन होने ही हैं, स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होने ही हैं, क्वालिफिकेशन होने ही हैं. What are those qualifications? 1, that it should have a permanent population. Second, it should have a defined territory. इसकी जो टेरिटरी होगी, इसका जो बाउंड्री होगा, दायरा होगा, वो फिक्स्ड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए. It should have a government. That is one aspect of state. ठीक है, so we will understand in the further slides what to be understand by the term government. And the fourth is that it should have the capacity to enter into relations with the other states. दूसरे states के साथ relation में, मतलब एंटर करने का रिलेशन जो है, वो उसका जो अधिकार है वो इनके खुद के पास होना चाहिए, विच मीन्स बेसिकली कि इनके पास सोवरीन पावर होना चाहिए. What exactly is understood by the term sovereign we will see when we do the topic of preamble. ठीक है, और let's say features of constitution, उसमें भी हम sovereign पे बात कर सकते हैं. For the time being, you can understand sovereign would mean that when you have the supreme right over yourself, nobody else is taking the right on your behalf, and you have the capacity, because you have the right to take decisions for yourself, so you will have the capacity to enter into any relations with any other states also. So these are the 4 criteria or the qualifications of a state. Now you see that the government, जिसको हम आम भाषा में ऐसे ही समझ लेते हैं ना, सरकार जिसको हम बोल देते हैं, टेक्निकली थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है. आम भाषा में तो बोल ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन टेक्निकली जब हम डेफिनेशन वाइज समझेंगे, सो यू कैन सी दैट गवर्नमेंट इज जस्ट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द स्टेट, एंड वी जस्ट normally equate state with government. No, state will have all of these features. जहाँ ये सारे features होंगे, जहाँ वो community होगी जिसमें ये सारे features हैं, that will be called as a state. So for example, your NCERT standard 8 chapter 1 में ये section दिया हुआ है. Now this also defines state. ठीक है, why am I showing this? कि NCERT को यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली इन पॉलिटी, एंड स्पेशली 8th वगैरह तो कोई देखता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 11th देख लेते हैं. But here the idea is that they have asked you the question related to state right in 2021. Now you will not assume कि चलो मेरे को एक इंटरनेशनल डेफिनेशन पढ़ना था, ऐसा तो अब तो क्वेश्चन आ गया इसलिए सर्च करना पड़ा ना. यू विल नॉट डू इट राइट इन एडवांस. हाउ कैन यू डू इट? लक्ष्मीकांत की क्या हर वर्ड को आप इंटरनेट पे सर्च करके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन तो नहीं खोजोगे, बट NCERT के हर पेज को तो पढ़ा जा सकता है ना, एंड यू कैन फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स. ठीक है, देयरफॉर सिग्निफाइंग दिस इंपॉर्टेंस ऑफ NCERT हियर. So here according to them, the state refers to a political institution which represents a sovereign, I just explained you, people occupying a definite territory. यहाँ इन्होंने हर पैरामीटर नहीं दिया हुआ है as per the international law, but still they have explained it pretty decently. So for example, अगर नेशन स्टेट की बात इसलिए मैंने की थी कि वो एक नेशन को सिग्निफाई करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टेट, एंड देन स्टेट में एक गवर्नमेंट हो जाएगा, because government is one aspect of state. So let's say the state is Indian state and it will have a kind of government. For example, the kind of government we have is the democratic form of government. Therefore, Indian government या executive, जिसको हम सरकार बोलते हैं, वो सरकार की executive branch होती है. Now in one topic I will also explain you the types of government, and I will show you what are the 3 branches of government. So you will democratic government, so you will understand legislature, executive and judiciary. बट उसमें से जिसको हम एक्चुअली में सरकार बोलते हैं ना, समझते हैं, जो मिनिस्टर्स रहते हैं, जो रूलिंग पार्टी के रहते हैं, दे आर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. उनका काम होता है पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट करना, लॉज बन जो गए उनको एग्जीक्यूट करना. सो द गवर्नमेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव विल बी जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टेट. इट विल नॉट be equivalent to the state. So state refers to more than just the government. I hope I have made myself clear. So यहाँ पे भी आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है that the word state is often used in the chapter and it does not refer to the state government, जो राज्य सरकार होती है. ठीक है, वो इसका मतलब नहीं है. So when we are using the word state, हम उसको government से distinguish कर रहे हैं, because the work of the government or executive branch, as I just said,
इज़ टू एडमिनिस्टर एंड इन्फोर्स द लॉ. इनको लॉ इन्फोर्स कराना होता है, उसको चेक करना होता है कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं. और सरकार तो बदल सकती है इलेक्शंस के साथ में भी, बट स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट विल बी अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और अ कम्युनिटी जहाँ सोवरीन लोग होंगे जो अपने खुद से डिसीजन ले सकेंगे और एक डेफिनेट टेरिटरी ऑक्यूपाई करेगी. तो हम अलग अलग कंट्री के नाम से स्टेट समझ सकते हैं. एंड व्हेन वी लेट्स से फॉर एग्जांपल से द इंडियन स्टेट, इट विल हैव वन काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड स्टेट रेफर्स टू मोर दैन द गवर्नमेंट. नाउ सी दिस क्वेश्चन 2021 prelims UPSC CSE. It reads as which of the following best defines the term state. ठीक है, you can pause the video and try to answer the question. I have just now explained it in like quite detail, so pause the video, try to answer, and I will explain you now the answers to it. Now let's start from the last. I usually do this because it helps you to eliminate better. आप ऊपर से भी कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी करो. चलिए यहाँ से एक बार देखते हैं. बेस्ट डिफाइंस द स्टेट. वो कह नहीं रहे कि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बतानी है, बिकॉज फिर आप कहाँ की डेफिनेशन लोगे? डिफरेंट पीपल वुड हैव, डिफरेंट थ्योरिस्ट वुड हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, राइट? तो यू कैन नॉट give one proper definition of state. Therefore the best possible definition would be try to be answered. Let's see the last one. It says a society permanently living in a definite territory. Now see, definite territory you will see is a keyword which they have used in all the options, and we have seen कि हाँ भाई definite territory तो है ही. हमने यहाँ पर भी देखा हुआ है और हमने पहले भी देखा हुआ है कि definite territory is a keyword and यहाँ पर भी defined territory is a keyword, right? तो ये तो है ही. अब ये तो हर ऑप्शन में है, तो उससे तो आंसर निकलना नहीं है. So it says that okay, they are living in a definite territory with a central authority, an executive responsible to it, and independent judiciary. Looks okay because nothing is wrong in it, but we have to see the best possible option. तो अब इसको हम hold पे रखेंगे. Then it says number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. Now culture tradition का भी हमने देखा है, as such it has no significance here to be talked about. And then a number of persons, ये बहुत ही vague word हो जाता है, राइट? तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. देन अ पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल. नाउ ऑफ कोर्स इट लुक्स वेरी मच गुड बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो हमने देखा ही है, डेफिनेट टेरिटरी भी है, पोजेसिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम विच मीन्स सोवरेनिटी बिल्कुल है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट, सेफ गार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस. अगेन यू विल सी कि गलत तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी पुट ऑन होल्ड. नाउ लेट्स सी दिस. A community of persons permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. Now if you let's say compare all of these, तो अब आपको दिख रहा होगा society permanently living in, तो इसको अब हम इग्नोर कर सकते हैं because more appropriate keywords would be either community or political institution. ठीक है, तो इन दोनों को तो हमने eliminate कर दिया. This is how you reach on to the best definition of government. Then नाउ व्हेन यू ट्राई टू सी कि दोनों में बातें ऑलमोस्ट सिमिलर की जा रही हैं, बट इफ़ यू सी द प्रिसाइज डेफिनेशन, ठीक है, अगर आप प्रिसाइजली समझने की कोशिश करोगे एक परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये हो गया आपका परमानेंट पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट. आपको 4 कीवर्ड्स बिल्कुल सीधे सीधे क्लियर इन अदर मैनर दिख रहे हैं. बट इफ़ यू सी दिस लॉ, ऑर्डर, राइट्स, सस्टेनेंस एट्सेट्रा, ये सब एडिशनल चीज़ें हैं. ठीक है, दीज आर नॉट टू बी टॉक्ड अबाउट स्पेसिफिकली इन द डेफिनेशन. तो सब कुछ मिला के हम बेस्ट कहाँ पे पहुँच सकते हैं? इस पे पहुँच सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू ट्राई टू डिड्यूस द आंसर. नेक्स्ट लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. Now, as per the Oxford Dictionary of Political Science and International Relations, the term government refers to the institutions, rules and administration of the state authority. Now, what is state you already know. तो उस अथॉरिटी को चलाने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस, मैकेनिज्म्स, रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है, उसको ही हम गवर्नमेंट का नाम देते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट टू बी द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यू नो, द वन विच विल एडमिनिस्टर, द वन विच विल एग्जीक्यूट, राइट. सो एज पर इग्नू अगर हम बात करें, गवर्नमेंट, this term is a set of institutions which exercises the control through legal devices. इनका काम क्या होगा? Administer करना. So they will exercise the control through legal devices and they will also impose the penalties on those breaking the law. क्योंकि लॉ बनाना एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है. This is not the work of the executive or the government. That is the work of your legislature. But to administer and to enforce the law made by the legislature is the work of the government, or in other words you say it to be executive.
although this I will explain at some other point of time very soon in the coming videos. So government, as we have seen, it is just one of the elements, but one of the 4 essential elements of the state. The other 3 I have already shown you. Also you have to remember the no state. Okay, again the state here would mean that nation state. So no state is possible without the government. That not only provides security to the people, so it is the work of the government to provide security to the people, but also looks after their basic needs and ensure their socio-economic development. So let's say when we saw the definition of the state, these 4 features, अगर उसमें से हम government हटा देते हैं, so if let's say only permanent population is there, so we have a defined territory, a permanent population is here and they can take any kind of decisions for themselves, and let's say with the nearby state they can manage any relation, but there is no government to actually manage the rules, only it is the people here. तो people में तो chaos हो जाएगा ना, किसकी बातें मानी जाएगी? You need to have one authority. So government is the significant aspect of state. Otherwise without it how will the things be managed? ठीक है, so इनका role काफ़ी important है. Now you have understand the meaning of government also, but then you come across another keyword governance in your syllabus and then you get confused कि क्या दोनों एक ही चीज़ हैं. So नहीं, government will be that institution, right, or administration of the authority, but governance will be, as per the Oxford Dictionary, the process. Governance is a process, government is the authority or the institution, but वो institution या authority जब काम करती है उस process को governance बोलते हैं. So it is the process of collective decision making and policy implementation, but the authority to implement the policy is your government. I hope it is clear. So the policy is made and the authority to implement it, so implementing authority is your government and the process of implementation is your governance. If this is clear to you, everything is clear to you. Okay, so it is used very distinctly from the government to reflect the broader concerns, because it is about the entire process with norms and processes relating to delivery of the public goods, and the authority which will help people get those goods or which will act as a link with the public, that authority will be government, but the process of doing that for the public is the governance. Okay, so I've explained you the concept, the keywords of constitution, of state, of government and of governance. 4 keywords हमने आज देखा. Next video में when I discuss about more on the constitution, we will talk about that why does a country needs a constitution or what are the functions performed by a constitution. ठीक है, यहाँ जैसे हमने बात की थी ना that a constitution seeks to perform several functions. So from the boxes that I have done, I have talked about this. This will be the next one. Constituent Assembly पे हम बात करेंगे when we will talk about the making of the constitution. Majority and amendment will of course be taken absolutely distinctively, एंड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया. सो ऑल द बॉक्सेज हैव कवर्ड. सोवरीन ये प्रियम्बल में यूज़ हो जाएगा. डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, वो अभी जैसे जैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे बात करेंगे अपने आप दैट विल फीचर आउट. ओके, so hope the video was of some use to you. Please do leave your feedback in the comment section. Please do like, comment, share and subscribe, without which I will just not be able to help you guys more. And thank you so much. See you in the next video. Bye bye, take care.